Welcome. The current problem is based on law of change of mechanical energy. And the statement of the problem is this. Two balls of same mass M connected by an unstretched spring of length L0. That means natural length string का L0 है. Lie on a smooth horizontal surface. Find a constant force F directed along the axis of the spring begins to act on one of the balls. Point, I take this. After some time, the length of the spring becomes maximum and equals L max. मतलब ये maximum length है, वो भी दिया हुआ है. The spring का length. Maximum length of a spring itself and natural length of a spring, both are given. Determine the coefficient of elasticity of the spring, that is K. Spring constant निकालना है. So मैंने इसके लिए स्प्रिंग मुझसे बनता नहीं, इसलिए मैंने एक फोटोग्राफ रेडी करके रखा हुआ है. And this is the initial position of a spring block system. और ये दोनों ब्लॉक्स जिसको मैंने बॉल टाइप से बना दिया है, दोनों के मासेस सेम है ना. स्प्रिंग इज इन बिटवीन, इट्स नेचुरल लेंथ इज राइट नाउ L0. और मैंने इन दोनों ब्लॉक के x कंपोनेंट्स भी लिख दिए हैं, x10 एंड x20. 0 t equals 0 को रिप्रेजेंट करता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. सो दैट आई कैन राइट L0 equals x20 minus x10. and what is L max? तो ये फाइनल कंडीशन मैंने लिया है. जब एक स्प्रिंग मैक्सिमम स्ट्रेच हो गया उस टाइम पर इसका मुझे लिखना चाहिए x2f x1f, बट वो शॉर्ट में हो गया x21 x11. and so this difference is L max, that is equal to x21 minus x11. and this problem can be solved in many ways. ये तो इनिशियल था. It can be solved in frame of reference attached to the earth, मतलब lab frame में बन सकता है. It can also be solved in the center of mass frame, जिसको CM frame हम लोग बोलते हैं, उसमें बन सकता है. and it can also be solved by using classical mechanics method, that means two body problem method. अब मैं दो मेथड चुनता हूँ, वो दोनों फिजिक्स का है. क्लासिकल मैकेनिक्स वाला मेथड किसी और टाइम के लिए रख लेते हैं, वैसे भी लोग उसको पसंद नहीं करेंगे. एंड द फोर्स मैंने अप्लाई कर दिया है आगे वाले ब्लॉक पर. इसका मतलब ये नहीं कि पीछे वाले ब्लॉक पर अप्लाई नहीं कर सकते थे, पीछे वाले पर भी कर सकते हैं. आई विल डू इट, बट लेट मी सॉल्व दिस प्रॉब्लम in the lab frame first. Laboratory frame, that means a frame fixed to the ground, इसमें सॉल्व करना है. और यहाँ पर एक चीज़ दिख रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक 1, that is delta x1 is simply x11 minus x10 and delta x2 is x21 minus x20. काइनेमेटिक्स में पहले संभाल लेता हूँ, so I wrote something like that. So let us choose a coordinate system associated with the horizontal surface, directing the x-axis towards right. and बाकी का मैंने सब कुछ बता ही दिया कि ये ऐसे मैं शुरू कर रहा हूँ प्रॉब्लम को. and I'm going to use the principle of the law of change of mechanical energy. And for a system, it tells that change in kinetic energy plus change in potential energy is equal to work done by all the external forces. So मैंने पहले सिस्टम चुन लेता हूँ. सिस्टम इज स्प्रिंग ब्लॉक, दोनों ब्लॉक
plus a spring is the system. So F in this case is the external force in horizontal direction. Vertical direction में है, लेकिन vertical direction में motion हो नहीं रहा, friction present है नहीं. I don't have to worry about vertical direction. So there is one external force on the system, that is F. So now I'm going to use the law of change of mechanical energy of the system, two balls plus a spring, in the time interval from the beginning of the force action to the moment of maximum extension of the spring. And I would like to write like this: change in kinetic energy plus potential energy equal to work done by external forces. थॉर्टन मैरियन की बुक में ये लिखा हुआ है कुछ ए, मतलब सारे इंटरनेशनल लोग वही लिखते हैं. जॉन डी ग्रिफिथ्स, नॉट दिस इज सम अदर ग्रिफिथ्स, रोट द क्लासिकल मैकेनिक्स बुक, एंड उसकी बुक में भी यही लिखा हुआ है. एंड ऑफ कोर्स लेंदाउ लिस्टफिज भी वही. खैर इन सब लोगों के नाम लेने से कोई फ़ायदा नहीं है. Whenever someone goes to the IITs, you will be introduced to those books. They are all Oxford books and they are favorites of their professors. So अब तो भूल ही जाना है. अब मैं आगे बात कर रहा हूँ. मैं मान लेता हूँ इनिशियली तो सब कुछ रेस्ट में था. Every ball was at rest and a spring was not extended at all. So at the moment of maximum extension, फोर्स लगा है सिस्टम पर. मैंने किसी और एक बॉल पर तो फोर्स लगाई है, वो तो दिख ही रहा है. पूरे सिस्टम पर भी लग रहा है फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स. So system will have always an acceleration. So velocity of the system increases. System is accelerating. And so both the blocks, both the balls, blocks नहीं बोलो balls ही बोलो, तो both the balls are also accelerating. And I guess कि spring is continuously stretching. So but क्या ना कि maximum extension तभी होगा जब spring stretch करना बंद कर देगा, when the spring stops extending anymore. And in that case both blocks should have the same velocity in same direction, क्योंकि otherwise जो है ना एक्सटेंशन रुकेगा ही नहीं. दोनों रेस्ट में तो आ नहीं सकते हैं क्योंकि फोर्स तो लग ही रहा है दोनों के दोनों पर हमेशा. तो एक ही सॉल्यूशन है इसका कि मैक्सिमम एक्सटेंशन पर तभी आएंगे जब स्प्रिंग एक्सटेंड करना, फर्दर एक्सटेंशन स्प्रिंग का बंद हो जाएगा. एंड दैट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन बोथ द बॉल्स हैव द सेम वेलोसिटी. चलो मान लिया सेम वेलोसिटी हो गई, तो दोनों बॉल्स की अगर सेम वेलोसिटी हो जाएगी तो उनके सेंटर ऑफ मास की भी वेलोसिटी वही हो जाएगी जो दोनों बॉल्स की है. बिकॉज सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी यहाँ पर ऐसे ही लिखी जाएगी v1 प्लस v2/2, और दोनों बॉल्स की वेलोसिटी सेम हो गई. सपोज दैट v, तो v1 प्लस v2 बिकम्स 2v/2 इक्वल्स vc, vcm इक्वल्स v. दैट मीन्स सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी दोनों में से किसी एक बॉल के बराबर हो जाएगी, यानी कि दोनों के दोनों बॉल्स सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में रेस्ट में आ जाएंगे. दिस इज वन ऑफ द प्राउड स्टेटमेंट ऑफ ए क्लास 11 स्टूडेंट. When he or she talks something like that, both the blocks will come to rest with respect to the center of mass. It feels, oh, I have learned physics. Solving problem is a kind of addiction. Analysis is a kind of addiction. And to be a good analyst,
One must fail many times. I can say infinite times. इतनी बार फेल कर लो. There is the single solution. Because I don't have known any formula like cracking the IIT JEE. I never got it. So I was never a popular teacher. Because I can't talk like this. Because I have cracked just one thing in my whole life, and that is a nut. I've only cracked nuts. So I don't talk about cracking anything. So I always talk about failures. Fail, fail and fail. Till your mind revolts. It stops failing anymore. And then you will become a good analyst. That is the only process I know. So you have to work harder. And even to the extent you are not able to work anymore. Well, this is a little motivation, very negative motivation. But I talk like this. So at the maximum extension, let the speed of the both balls become v, because they are equal. And so work done by external force, in this case external force is doing only work on this ball, because certainly external force is not acting on the rear ball, it is only acting on the front ball. So front ball की displacement जो हुई है, and this force is constant. So this is simply work done by external force. Here is the matter of force multiplied by displacement. So this W becomes simply F multiplied by x21 minus x20 and nothing else. And what is the change in kinetic energy and change in potential energy? So change in kinetic energy of the front ball is half mv square, and the rear ball is the same, half mv square. And change in potential energy. So potential energy of the spring, the length has been stretched. Final length of the spring has become L max, and initially it was at its natural length. So change in potential energy of the spring is also positive, because the spring has been loaded. So this will become half k we don't know, we have to find it, multiplied by extension in the spring square. So this is the change in kinetic energy, and this is the change in potential energy. So you can write the change in mechanical energy theorem like 2 multiplied by half mv square plus k divided by 2 L max minus L naught square, and that will be F x21 minus x2 naught, force multiplied by displacement. And this is our equation number 1. And I used mechanical energy conservation, you can't say I haven't. And now we need to, in the second step, first step has been completed, kinematic considerations are 0 step, and writing an equation based on the laws of physics is the second step. And here comes the final step, and in this final step I am going to describe the motion of center of mass of the system, because in such problems there is a system, we have to talk about the center of mass of the system. It is not the choice
It is compulsion. So in this second step, I'm going to talk the dynamics of center of mass of the system. And system is two balls plus a spring. So I'm gonna write first. I'm gonna think first about the Newton's second law of motion for the system, that is net external force equal to mass into acceleration of the system, that is the acceleration of the center of mass. So net external force in horizontal direction is F along positive x-axis equal to total mass of the system is 2m into acceleration of its system, that means center of mass. Yeah, this is, and I think ACM is a constant here because F is a constant, so ACM is a constant. This is a very simple thing to observe, but you can't do this without practice. If you haven't failed many times, you are not going to notice these things. This is not possible. This you can't learn from anybody. So acceleration of the center of mass is constant. So I know the velocity of center of mass at this moment is equal to v, and v is also an unknown. So you have to take care of unknowns and very few smaller things. So you need to fail many times in your life. And I'm going to write down v, and a is constant, so I'm going to write down v square equals u square plus 2as. Yes. So u here is 0. So if I am willing to use v square equals u square plus 2as, this should be like this, and u here is 0. So you would like to write displacement equals v square by 2acm. Okay. Have patience. What is S? S is the displacement of center of mass. And what is the displacement of center of mass? I have written things in terms of coordinates. If your mind doesn't click at this moment, this is called lack of practice. You haven't failed required times till now. So keep failing. S is the displacement of center of mass. How can I write this? These are the coordinates. So here position, since both masses are same, so here is the position of center of mass in the middle, and that is x11 plus x21 by 2, and in the initial condition the position of center of mass is simply x20 plus x10 divided by 2. So displacement of the center of mass is change in position. This is the basic thing, and I am going to write this displacement of center of mass as x11 plus x21 by 2 final position minus x10 plus x20 by 2, that is the initial position coordinate of the center of mass, equal to v square. V is basically the velocity of center of mass, final velocity of center of mass, divided by 2acm. Yeah, that's right. So and now you can do everything you want. This is the end of the problem solving session. How? Because you know what is the value of ACM? ACM is F upon 2m perhaps, where I wrote yes here. This is
ACM is equals F upon 2m. So this 2 gets cancelled out, and if you care to write one step further, you should write like this: FA square equals F by m, and that is the displacement. Should I write the whole statement? Oh, I would like to write it: x11 plus x21 by 2 minus x10 plus x20 by 2. Yeah. And then what? Where is k? K is hidden somewhere in the statement of B. K is here. K is here. And B is also here. K is also here. So find B square from here and put in this equation. And you are going to get your result, I promise you. And the result I know is going to be like this: F upon L naught minus L minimum. But बस सही सही करते जाना, you will get your result. So this was the solution with respect to the lab frame. But we can use this in center of mass frame too, and center of mass is accelerating. That means, let me remove all those things. I will keep something from this solution to directly use in the next solution. Center of mass is accelerating, so it's a non-inertial frame. Now we are going to invite center of zero forces. So what is the acceleration of center of mass exactly? Basically, I know the acceleration of center of mass. I already found it is equal to, I can write the Newton's second law of motion for the whole system, so that I can write here F is equal to 2m into ACM. That gives the acceleration of the center of mass, that is a constant, F upon 2m, because F is a constant. So the center of mass of the system is accelerating. Here center of mass is here and it is accelerating. So any observer placed at the center of mass of the system will be the observer of non-inertial frame, right? So I put the observer here, and you put the observer here in initial position and final position. In initial position, both the balls are at rest with respect to center of mass, and in final position as well. Initial, certainly initial and final position becomes important. They became important. Why? Because we are dealing with conservation principles. We are not dealing with Newton's laws of motion dynamics, where we need to consider any intermediate position, intermediate moment. This is the advantage of using conservation principles, so that we can talk in initial and final position terms. So in both cases, the blocks are at rest with respect to center of mass. But center of mass is accelerating always with the same acceleration. So zero forces are going to act on this. Zero forces इधर लगेगा इस पर, mass into acceleration of center of mass, और यहाँ भी लगेगा इस पर भी, इस पर ऊपर दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ये लगेगा, दोनों ब्लॉक्स पर सेंटर ऑफ मास लगेगा. और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जीरो हुई है, क्योंकि इनिशियली भी पूरा सिस्टम रेस्ट में था, सो नो काइनेटिक एनर्जी. फाइनली भी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में दोनों बॉल्स रेस्ट में थे, सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी सिस्टम की जुड़ी जीरो है. दैट मीन्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी
of the system in CM frame is equal to 0, and I am again willing to write the law of change of mechanical energy of the system with respect to this non-inertial frame of reference having origin at the center of mass of the system. So what can be it? This will be change in kinetic energy, that is equal to 0, plus change in potential energy equal to work done by external forces. And this at this moment, work done by external forces, I guess सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ है ना, कुछ सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में भी कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा इस ब्लॉक का. आई वुड लाइक टू कॉल इट डेल्टा x1 डैश. राइट हैंड साइड में हुआ होगा और फोर्स इस पर लेफ्ट हैंड साइड में लिखकर लगा होगा. सो दिस इज MACM, and MACM is simply F/2. You can see from here MACM is F/2. So this is the work done by pseudo force on the rear ball, and इसके डिस्प्लेसमेंट को, ये जो फ्रंट बॉल है इसके डिस्प्लेसमेंट को मैं डेल्टा x2 डैश मान लेता हूँ. तो इस पर जो फोर्स लगेगा F माइनस F/2 लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स. तो F minus F/2 is again F/2, but this time plus F/2 इंटू इसका भी डिस्प्लेसमेंट राइट हैंड साइड में हुआ है. सो इसके डिस्प्लेसमेंट को मैं डेल्टा x2 डैश लिख देता हूँ. एंड दिस इज 0, दिस थिंग इज 0. सो आई नीड टू राइट जस्ट वन थिंग, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी है. स्प्रिंग को इस बात से कोई मतलब नहीं है फ्रेम कौन सा है. स्प्रिंग को इस बात से मतलब है किसने डिस्टर्ब किया मेरे को. आई वांट टू लिव इन पीस. दैट मीन्स आई हैव ओनली जॉब टू मेंटेन माय नेचुरल लेंथ. आइदर यू कंप्रेस मी और स्ट्रेच मी, आई विल गेट लोडेड. Unloaded with respect to what? The spring will tell you I can only care about how much is the change in my length. So a spring has been loaded again, and this is again half K, and the L max minus L naught. This is the extension in a spring square. So right hand side of the left hand side is completed. Right hand side of the equation becomes F/2 delta x dash x2 dash minus delta x1 dash. And you know, this x1 dash and x2 dash changes. This delta x2 dash minus delta x1 dash is going to be equal to, I don't think I need to explain this. It will be delta x2 minus delta x1, and this was nothing but L max minus L min. You can check it, and you will get, by doing this you will get to your same result that you got earlier. K is equal to F upon L max minus L min. L min is L naught basically. L min is the natural length, L naught. I can do mistakes like this. पिछले क्वेश्चन में भी मैंने किया था. M1 लिखते लिखते लास्ट में उसको M1 M2 लिख दिया, और ये मैक्स देखते ही मुझे मीन याद आ जाता है. And I can do things like this. So वो क्लासिकल मैकेनिक्स वाला भी मेथड है, बट वो रिजर्व रखना चाहता हूँ मैं. बहुत कोर्स ले लिया था मैंने पढ़ते वक्त क्लासिकल मैकेनिक्स का.
And I was reading mathematics, Lagrangian, Hamiltonian, and so there is a variation in this problem. और वो वेरिएशन आप पुट कर सकते हो कि दोनों मास ले लिया, दोनों के मास से M1 M2, चलो अब की बार चेंज ही कर देते हैं, इसको वेलोसिटी दे दो V1 और इसको वेलोसिटी दे दो V2, तो अब फ्रिक्शन व्रिक्शन कुछ मत रखो, स्ट्रेट लाइन में दौड़ने के लिए छोड़ दो. एंड ऑफ कोर्स द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज एक्टिंग बिटवीन देम. ये ग्रेविटेशन में आएगा ये क्वेश्चन. जब आप से पूछा जा सकता है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस, दिस इज द इनिशियल कंडीशन, इनिशियल लेंथ भी कुछ देना पड़ेगा भाई, इसके बिना काम नहीं चलेगा. वो तो इन्फॉर्मेशन है, वो तो क्वेश्चन आएगा सामने में तो आ जाएगा. एंड दे कैन आस्क यू फाइंड द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द बॉल्स ड्यूरिंग देयर मोशन. दिस इज ए गुड वेरिएशन. फिर से ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन तो काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन, फिर से ये क्वेश्चन आएगा. ये F लगा दिया है, H.C. वर्मा की बुक में जाओ तो वो F1 F2 लगा देंगे. एक बार फोर्स नहीं भी लगाएंगे, उनका अलग वेरिएशन बन जाता है. एंड अगेन ही डिड द गुड थिंग कि इन दोनों के इस पूरे सिस्टम ऑसिलेट भी करेगा. स्प्रिंग इज देयर, द हुक्स लॉ ओबेइंग स्प्रिंग. सो ये वो काम भी करेगा, ऑसिलेट भी करेगा. और जब ये ऑसिलेट करेगा तो यू कैन बी आस्क्ड टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ मोशन, द एम्पलीट्यूड्स ऑफ इंडिविजुअल balls and something like that. वैसे IITs में इसके क्लासिकल अब मैकेनिक्स वाला जो एप्लीकेशन है उसके प्रॉब्लम पूछे हैं. यू कैन डू देयर. वो M1 M2 कोई लॉ वो लिख दिया है, उसके बाद उन लोगों को दे दिया है. शायद उन लोगों के पास उस वक्त इंटेलिजेंस की कमी हो गई थी, मैं जानता हूँ. ऐसे बहुत सारे लोग हैं IITs में जिनको खुद पढ़ने की ज़रूरत है. Though these are our premier institutes, but I can tell like this. तो वहाँ भी ऐसे प्रोफेसर्स हैं जो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी और मगध यूनिवर्सिटी से PhD करके उन्होंने किया है. So they would set the problems of classical mechanics. हालांकि वहाँ ऑक्सफोर्ड से भी में भी प्रोफेसर रह करके लोग आए हैं. And they are experts of classical experts, mathematics, everything. They talk in a terminology, you will be just dead. What are you talking about? Like things. Thank you for watching.